Good evening. Welcome to Akashvani and to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं सोनू सूद। Thank you, Manoj, and welcome, Sushma ji. And now first the headlines. India to remain fastest growing major economy in the world in financial year 2024. Coal Ministry generates over 28 crore rupees revenue during special campaign 3.0 and oil price remains stable in global markets today. भारत वित्त वर्ष 2024 में भी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत 28 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें स्थिर दिख रही हैं। भारत वित्त वर्ष 2024 में भी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि खपत में वृद्धि के साथ निवेश में धीरे धीरे आ रही मजबूती और ठोस औद्योगिक गतिविधियां विकास को आगे बढ़ाने में सबसे आगे चल रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अगस्त महीने में दोहरे अंकों में बढ़ा, जो पिछले 14 महीनों के दौरान सबसे अधिक है। इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि राजस्व में नियमित रूप से हो रही वृद्धि के साथ केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठोस बनी हुई है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पिछले महीने मुद्रास्फीति के दबाव में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि रोजगार के मोर्चे पर रुझान काफी उत्साहजनक हैं और बेरोजगारी की दर में गिरावट आ रही है। हालांकि रिपोर्ट में फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रम के कारण वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं का भी उल्लेख किया गया है। इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका भी इसमें जताई गई है। सुषमा जी, कुल मिलाकर जो वित्त मंत्रालय का आकलन है उसमें और दुनिया की कई अन्य जो रेटिंग एजेंसी हैं या प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, उनका भी आकलन है कि भारत तेज अर्थव्यवस्था इस वर्ष भी यानी यहाँ विकास दर सबसे तेज गति से बढ़ेगी, ऐसे आसार जताए गए हैं। जो उपलब्ध हालात हैं अपने देश के, उन आर्थिक पैमानों पर, आंकड़ों पर हम कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो डबल डिजिट पे आ गया है अगस्त में, और ये 14 महीने के बाद सबसे तेज गति पे पहुंचा है अगस्त में। हालांकि ज्यादातर देखा जाता है कि जैसे देखिए, कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसके आखिर में हमेशा सारी जो तेजी आती है आंकड़ों में पिछले दो लास्ट क्वार्टर्स में, लेकिन ये तो दूसरे तिमाही में ही आ गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोर सेक्टर का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कोर सेक्टर माने जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी 12% के रफ्तार पे जा रही हैं। तो ये जो काफी जो आंकड़े हैं, अगर हम बाकी आंकड़े को भी देख लें जो रिपोर्ट में नहीं है, एक हमारी जो जीएसटी कलेक्शंस वो बढ़ गई हैं 1.6 लाख करोड़। तो जो रेवेन्यू इनफ्लोज है, जो सबसे जरूरी है किसी सरकार के लिए, वो अच्छे अपने तरीके से आ रहे हैं। वही एक बहुत बड़ा डर रहता है हर सरकार को कि भाई रेवेन्यू इनफ्लोज कैसे हैं। तो रेवेन्यू इनफ्लोज ज्यादातर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी की जो इनफ्लोज हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप बाकी आंकड़े देख लें, जैसे जो क्या कहते हैं, डिमांड बहुत बढ़ रही है। जो सेल्स एक बहुत बड़ा क्षेत्र है
वो है चार पहियों की गाड़ियों का। जो पैसेंजर कार क्षेत्र है वो मेरे ख्याल 40 या 50% का हिस्सा लेता है पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। तो उसमें जो तेजी आई है वो दिखा रहा है, वो बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहे हैं और इतने तक आ गई है कि जो कंपनीज है वो डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। दूसरा रिपोर्ट ये भी आ रही है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम एफएमसीजी कहते हैं, उनकी भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये अब फेस्टिवल सीजन में जनरली नवंबर में जहां दिवाली के आसपास आता है, ये पहले ही आ गया है। जनरली क्या होता है कि श्राद्ध के दिनों में डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, लेकिन इस बार खबरों के अनुसार ये डिमांड श्राद्ध के दिनों में भी बड़ी तेजी से रफ्तार से आ रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि डिमांड बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी में। Sushma ji, the report, along with highlighting the fact that India's growth, indications are very robust and it will remain the fastest growing major economy in the world in the financial year 2024, it has also highlighted that inflationary pressures have eased significantly in last month, and the smooth downward trajectory observed in core inflation is likely to keep the headline inflation within the target band. How important do you find this estimation? This is very important because if you see other countries who have been battling inflation, I mean, if you go, for instance, to the UK and other European countries, they have been able to moderate inflation, but not to the extent and over the period that India has been able to do it. The US, yes, has been able to moderate inflation, but they have still not reached their target band of about 2%, because for a very large developed economy, their inflation target level is definitely much lower than ours. For the Reserve Bank, the central bank has put a band of 4 to 6%. Now, the latest data we have for September is that inflation has reached 5%, and it has been brought down significantly from the 6.8% recorded in August. Now, that in fact was a spike that we had both in July and August, largely due to food products. And that has now moderated, which is definitely a very encouraging sign, which was not expected. It was not expected that food inflation would moderate so quickly, but clearly the fresh crops coming into the market and the supply chain improvement has led to this moderation of inflationary pressures. So this is definitely a great achievement for this country. We also, like the rest of the world, last year faced a spike in inflationary pressures due to imported inflation coming in through energy prices and various other factors, global supply chain disruption. But we were able to manage it probably much better than the developed economies, which is a great achievement for the central bank and for the government. हेलो। हाँ मैम, आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? जी। हाँ, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे उन आशंकाओं की ओर जिसका इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि जो भारत की खाड़ी में यानी पश्चिम एशिया में जो ताज़ा स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनसे कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव हम आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसका कैसा कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता आपको दिख रहा है कि वहाँ पर हालात जिस दिशा में जाते हैं, जैसे कि अभी यानी कह लें कि कई मोर्चों पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि स्थितियां कहीं और अधिक तनावपूर्ण न हो जाए, तो हम कितना प्रभावित हो सकते हैं? एक तेल मात्र ही फैक्टर रहेगा या अन्य जगह भी अन्य मोर्चे पर भी हम प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है। जो स्थिति बनी हुई है वेस्ट एशिया में, हालांकि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल के प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन वो जहां ये जो कॉन्फ्लिक्ट लोकेटेड है वो बिल्कुल मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में आसपास सारी जो तेल के उत्पादन सबसे बड़े देश वहीं पर हैं, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, वो सब वहीं लोकेटेड हैं।
और अगर खुदा ना खास्ता ये जो वो है ये बढ़ जाए, उसमें और कोई देश आके इसमें इन्वॉल्व हो जाए, फिर तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। इस वक्त सिनेरियो ये है कि प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, प्राइसेस बढ़ गए, लगभग $90 पर बैरल के करीब पहुंच गए हैं। अब इंडिया की तरफ अगर आप देखें, हमारे ऊपर ये असर जरूर है। इससे पहले समझ लीजिए 3-4 महीने पहले तक $75-80 तक की रेट चल रहा था ये ग्लोबल प्राइसेस का, जो हमारे लिए मतलब ठीक है। अब आफ्टर ऑल हमारी जो हम जितना इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट 80% जो हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट हम बाहर से खरीदते हैं, तो हमें बाहर के देशों, बाहर के जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनके ऊपर काफी नजर रखनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो जो $75-80 के बैरल के ऊपर हम मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छे प्राइसेस हैं, लेकिन मैनेजेबल है। जबकि अब जुलाई में सऊदी अरेबिया और रशिया ने तब कहा कि वो अपने उत्पादन में कटौती करेंगे, 1.3 मिलियन टन टोटल पर मंथ वो करेंगे, और वो फिर उन्होंने सितंबर में वो एक्सटेंड कर लिया दिसंबर तक। तो ये जो इस कटौती की वजह से, इस कटौती की वजह से जो सप्लाई मार्केट में है वो कम हो जाएगी, उस वजह से प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन जब इजराइल हमास का जो वॉर शुरू हुआ, उससे पहले फिर भी प्राइसेस थोड़े से मॉडरेट हो गए थे, फिर नीचे आ गए थे $80 के करीब। फिर ये जो लड़ाई छिड़ गई, उसके बाद प्राइसेस फिर बढ़ गए हैं, जैसे मैंने कहा अभी $90 के करीब है। तो अगर ये प्राइसेस और बढ़ गए आने वाले दिनों में, अगर आगे के 2-3-4 महीनों में, तो हमारे लिए थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल आएगी। इस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले साल हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो था वो 2.1% था ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। लेकिन इस साल की पहली तिमाही में, अप्रैल-जून में, ये करंट अकाउंट डिफिसिट कम होके 1.1% ऑफ जीडीपी आ गया है, जो कि बहुत अच्छा है, मैनेजेबल है। अगर तेल के दाम बढ़ गए और अगर हमारी जो ऑयल इंपोर्ट का के ऊपर जो खर्चा है बढ़ जाएगा, तो हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये आफ्टर ऑल किसी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। Sushma ji, as you have highlighted, and the report has also highlighted that global uncertainties have been compounded by recent developments in the Persian Gulf, and the consequent high crude oil prices can pose a problem. Another factor is the interest rates, which continue to be high. The interest rate cycle hasn't yet reversed. Yes. Despite that, we are seeing that the corporate results are, corporate balance sheets are improving. And according to the report, their fledgling investment activity supported by a strong and emerging banking system and financial market make this outlook brighter. So you feel that our stable and very strong financial and banking system, the backbone, that is also a very important factor in the resilience which the Indian economy has been showing so far? Yes, definitely. The banking sector has been strengthened in the last few years a great deal. As you well know, the level of NPAs has been brought down considerably. There was a time about 6 or 7 years ago when the level of NPAs was very high and the banking sector was in some crisis. This has now stabilized the banking sector. There have also been some reforms. There have also been some decisions taken to amalgamate some banks. So the banking sector banking industry is in a very strong position just now. And I think definitely that is one of the reasons that India has been able to face these problems. We are not facing the contagion now. Don't forget, we are forgetting actually that way back in March, you had the failure of some banks in the US.
this went on to extend it to some European banks, the Swiss banks having collapsed, and one or two banks in Europe collapsing. But nothing happened in India. So this contagion factor, of course, didn't go globally, but India was unaffected, and that also reflects the strength of our banking system. Another point which the report mentions and which seems very significant is that employment trends are encouraging as labor force participation rate is improving steadily and the unemployment rate is declining. You think this is very important for a country like India where the demographic dividend, if it has to be encashed, there have to be enough employment opportunities and people have to be skilled enough. So you feel that the government, government schemes like Skill India, Startup India, Stand Up India, they are bringing results now? Yeah, I don't have any data on this, but I think obviously the schemes, these are schemes which are long gestation schemes. It will take time to get the results. The skilling schemes and the Stand Up India scheme. In the case of Stand Up India, of course, we can see very well that the startup sector is doing so well, and we have so many startups. We have so many unicorns and decacorns. So India is among the top countries as far as large startup ventures is concerned. Coming back to employment, the fact that the report talks about improved employment, we must remember that after the pandemic, happened in 2020 and 2021-22, there was a big employment problem, not just in India, but around the world, because industry had collapsed, everything had stopped working. So now we are getting a revival of a lot of the services sector, which employ large numbers of people, and this has brought about, I think, an increase in the labor force participation, which is something that we had been concerned about, say, up to about last year. This is definitely, and this also reflects the strength of the economy because, it shows that there is investment. If you're having investment, you're having greater manufacturing growth, you're getting, especially in services sector, India is doing very well as far as IT is concerned, financial services is concerned, tourism services are concerned. These are areas where there is a great deal of buoyancy and where there's a great deal of employment potential. So this also reflects the fact that employment levels have gone up. This also reflects the strength of the economy. Absolutely. And let's move to the next story. Coal Ministry has generated over 28 crore rupees revenue from scrap disposal during the Special Campaign 3.0. The campaign was launched on 2nd of October this year with a focus on Swachhata and reducing pendency in government offices with a saturation approach. The ministry said more than 1 lakh files were reviewed during the campaign. The Ministry of Coal, along with its public sector undertakings, have carried out various activities during the campaign. It has freed around over 50 lakh square feet of area by disposing of scrap. We'd like your comment on this story. This is not only the Coal Ministry. The special campaign is a campaign which is focusing on Swachhata and reducing pendency in government offices, departments, all across the country. And this year it has been done with a saturation approach. How do you see this, stress on cleanliness in government workspaces, and how do you think that will affect the delivery, the quality of governance? I think, I'm a person who has, during my career, I have had to go to many government offices. I mean, every day as a business journalist, you visit government offices to meet people and get information. And I think that, if you would walk into an office, you would see a desk piled high with files, and then at the back there would be cupboards filled with files. A lot of this is a lot of, unfortunately, useless paperwork, and a lot of this data, of course, now can be digitized, and it's, you don't have to keep all these papers. So I think that this is a great initiative, and also cleanliness at the workplace improves efficiency, improves productivity. If you are working in a clean and neat workspace, the person concerned, the person who's sitting there, feels more energized, certainly. And I think this is something that, we definitely need in government offices, which unfortunately have not been of the most
what shall I say, looking very neat in terms of the fact that they always seem to have a lot of papers. And of course, now we are moving towards paperless offices. So you'll be able to get rid of these and work in paperless offices. श्रोताओं, ये संकेत है हमारे आपके लिए भी, और बेशक रेल मंत्रालय की ये राशि आपको छोटी दिख सकती है, मात्र 28 करोड़ रुपए जिसे हम खबर में ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो संदेश है स्वच्छ रहने का और अपने घर में जो जमा अनावश्यक ऐसी चीज़ें जिनसे हम मुक्त हो सकते हैं और उनसे कुछ धन अर्जित कर सकते हैं, उसकी दिशा में हमारी विशेषज्ञ सुषमा जी इसी की ओर इशारा कर रही थी कि सरकारी दफ्तर में जो एक हम अंबार लगा देखा करते थे, उनसे निकलने की दिशा में ये अभियान काफी सफल रह रहा है। और कोयला मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न कार्यालयों में और साथ साथ निजी क्षेत्र भी यदि आगे आ जाएं कि जो भी अनावश्यक है उनसे मुक्ति पालें, सुंदर रहें, स्वच्छ रहें। आइए खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं और चलते हैं शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार आज सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद हैं। हम सीधे चलेंगे वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज लिवाली तेज देखने को मिली है। एशियाई बाजार पर जाएं तो हांगकांग को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर खरीदारी की गई। जापान और दक्षिण कोरिया में कारोबारी सर्वेक्षण के सकारात्मक संकेतों का निवेशकों ने स्वागत किया और चौतरफा लिवाली की। वहां गिरावट का जो रुख दिख रहा था आज पूरी तरह पलट गया। नजर डालें एक एक प्रमुख बाजारों पर। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 में 0.2% की वृद्धि हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की तेजी आई, लेकिन बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हिंग सेंग 1.1% लुढ़क कर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। कारोबार के दौरान निवेशकों के बीच यूरोजोन के ताजा कारोबारी आंकड़ों का इंतजार भी दिखा। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.5% की तेजी बनी हुई थी। उधर लंदन का फुट्सी 100 0.1% घाटे के साथ कारोबार कर रहा। The Gulf not spreading beyond the borders of Israel and Palestine, is that the biggest thing being watched right now, with a view, of course, of what it will do to the crude oil prices, as we were discussing a short while ago. That's going to impact all the world markets. Yes. It's interesting that, most world markets initially reacted and then settled down, like in India. And if you see now that most of the markets are moving actually in a positive way and are watching, I think there's a wait and watch approach, because the worry is that one of the big players in West Asia might get involved. And if they get involved, then this whole conflict becomes a much wider one. For the time being, it is confined to this smaller area. Of course, it is, a situation of great concern for everyone globally. But in terms of economic impact, it has yet to have the impact. For instance, in the case of the Ukraine conflict, don't forget that both Ukraine and Russia were very large exporters of commodities. Now, Russia and Ukraine are grain exporters, they are fertilizer exporters, they are exporters of metals. So the impact of the Ukraine-Russia conflict was far more initially than in the case of these two countries, which are, these two regions, which are much smaller. But we, as I said, it's not that this should be considered of any less concern. It's a very sensitive area. And if more countries get involved, it can have an impact. Now, of course, as you rightly mentioned, the first thing that would be impacted would be oil prices. And oil prices are hovering now between $85 and $90 a barrel. At some point, they did go up beyond $90 a barrel. But so there is this nervousness, I would say, in the oil market. But it has been contained because there's a feeling that demand from China is not going to be
so as high as anticipated, and that inventories with the US are fairly large. So this is what is keeping the market contained, I would say. So one really will have to wait and watch. सुषमा जी, यहाँ पर हम आपका ध्यान अमेरिकी शेयर बाज़ार की ओर ले चलना चाहेंगे और विशेष रूप से जो कल की ख़बरें हैं, वहाँ की बाज़ार से ख़बरें आई हैं, उसमें ट्रेजरी यील्ड है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, 5% से नीचे आ गया है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसके परिणाम दुनिया भर के वित्तीय बाज़ारों पर देखे जा रहे थे। यहाँ हम आम जो हमारे श्रोता हैं उनके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि ये जो ट्रेजरी यील्ड हैं वो क्या हैं, इनके दामों का बढ़ना क्या दर्शाता है और उससे शेयर बाजार पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी खरीदारी जो है वो इनकी वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो रही है, इन द सेंस कि इनकी डिमांड इतनी हाई नहीं है। तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स की जो कहानी है, ये क्राइसिस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं। अब क्राइसिस में इस वक्त अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है इजराइल के साथ, उससे लोग परेशान हैं, उससे लोग घबरा रहे हैं। तो जो बॉन्ड्स है ये बड़ी स्टेबल एक इन्वेस्टमेंट है। जब यील्ड्स बढ़ते हैं इसका मतलब है कि आपको इस बॉन्ड्स को बड़े ध्यान से खरीदारी करनी चाहिए और बड़े ध्यान से इनकी या लेना या देना करना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी कॉशन रखनी चाहिए। ट्रेजरी बॉन्ड्स बहुत जो कहते हैं रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब यील्ड बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जरा ध्यान से इसकी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। जी। Moving on to crude oil, oil prices were stable today following the previous session's dip after a flurry of economic data from Germany. The wider Eurozone and Britain sketched a bearish picture which could weigh on oil demand. In intraday trade, the Brent crude was trading at $90.28 per barrel. Western Texas Intermediate crude prices were trading at $85.88 per barrel when reports last came in. Your brief, estimation of which direction could recession go? Germany is already staring at a recession. It's already been in recession. You feel this might hit US and other countries of Europe? बस एक पंक्ति में मैम। Certainly it looks like it, but it's very difficult to say with the uncertain geopolitical climate. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Manoj. Lot of thanks, Sushma ji, for the views given in the program. And before we close, a reminder of the headlines. India to remain fastest growing major economy in the world in financial year 2024. Coal Ministry generates over 28 crore rupees revenue during Special Campaign 3.0. And oil prices remain stable in a global market today. And that is all we have for you in this edition of Market Mantra. We look forward to meeting you tomorrow again at 6:30 with a fresh edition. Goodbye. This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said that nanotechnology